So, hello friends. So today we will discuss another important topic of Indian polity, and the topic is conditions of service of CEC, that is Chief Election Commissioner and Election Commissioners. This is basically a very important topic. Why? Because as you know that the retiring जो भी रिटायर होते हैं CEC and ECs are not debarred from further employment under the central and the state government. So basically आप जानते हैं कि ऐसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में एंड विच इज एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड to be impartial. The authorities are required to be impartial and neutral in their decisions, because it is the election commission on whose base, and you can say it is the bedrock of the democracy, on whose base the democracy is being built, this is because it is the election commission which is responsible to conduct free, fair, impartial, neutral elections in the country. Superintendence of election, control of elections, and conduct of elections. Superintendence, control and conduct of elections has been entrusted to Election Commission of India, and and it is the Chief Election Commissioner and other election commissioners. So we know that there is one Chief Election Commissioner and two election commissioners. So all these three authorities, they should be impartial and neutral in their decisions. But there is a very big loophole in our constitution that they are not debarred from occupying future employment under the central and state government. तो अगर वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई पोस्ट दी जा सकती है, कोई कहीं आपको किसी मिनिस्ट्री में पोस्ट दी जा सकती है, कहीं आपको सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, या कोई भी आपको पोस्ट दी जा सकती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में. सो दिस इज अ वेरी बिग लूप होल, जो कि अगर आप जानते हैं कि यूपीएससी, CAG, so they are debarred from occupying future uh, debarred from future employment, further employment after they get retired. तो इनको आप रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट में नहीं लेकर आ सकते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको बैन किया हुआ है. सो the 7 members of UPSC and CAG, they, they after their retirement they are debarred from occupying further getting further employment under the central or state government. But this chief election commissioner and election commissioners, they are not debarred. So that is a very big loophole which we will study what is the repercussion out of that and what can be done, what is the solution which can be provided to to remove this loophole. क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? तो पहले कंडीशंस ऑफ सर्विस देख लेते हैं इनकी. प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, पता है आपको, प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. रिमूवल में आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिमूवल ग्राउंड्स, removal process, you can say, as a judge of Supreme Court. 6 years or 65, which age, whichever is earlier. ठीक है? So they are provided with security of tenure. And conditions, they receive salaries, allowances as judge of Supreme Court receives. All the chief election commissioner and election commissioner receive equal emoluments, equal salary, they have equal power, authority, and which a judge of Supreme Court receives.
So these are the important points which you must know. But they are debarred. They are not debarred from occupying any other office of profit under the central or state government. उनको बैन नहीं किया है. And what is the other condition of service? एक और important है कि after their appointment उनकी their allowances, salaries cannot be further reduced. Reduce नहीं की जा सकती. Conditions of service cannot be altered after their appointment. ठीक है. अब इसके बारे में देख लेते हैं. Because they are not debarred. Because they are not debarred from occupying posts under the central state government. So that puts a very big, you can say very big question mark on the impartiality of these officers. Impartiality of these officers. और आप जानते ही हैं आज का ज़माना जो है, क्योंकि रीजनल पार्टीज इतनी ज़्यादा मशरूम हो गई हैं, आज का ज़माना कोalition का ज़माना है. और इस टाइप के आज के टाइम में इलेक्शन कमीशन का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इम्पार्शलिटी का. क्योंकि अगर आप पार्शलिटी करेंगे और आप न्यूट्रल नहीं होंगे डिसीजंस लेने में, इम्पार्शियल नहीं होंगे, तो डेफिनेटली इट विल ग्रास रूट लेवल तक इम्पैक्ट किया जा सकता है, पड़ सकता है. क्योंकि इतने ज़्यादा पार्टीज़ हैं, सबकी अपना अपना वोट शेयर है, वो वोट ले रहे हैं लोगों का. तो अगर ये इम्पार्शियल नहीं होंगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में होंगे, तो जो और पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे बढ़ने में. जैसे अभी आप जान रहे हैं कि अभी तक आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं मिला, जबकि वो मीट कर रही है नेशनल पार्टी का स्टेटस. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इनकी वजह से क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट डिबार्ड, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं आज के टाइम पे इलेक्शन कमीशन के अंदर. तो what can be done? This is the problem statement. What is the solution? जैसे यूपीएससी मेंबर्स को रोका गया है, कैग को रोका गया है, they must be debarred from, first point, they must be debarred from occupying employment under the central state government आफ्टर देयर रिटायरमेंट. उनको डिबार करना चाहिए, जैसे यूपीएससी चेयरमैन को किया है या कैग को किया है. सिमिलरली सेकेंड, दे मस्ट नॉट, अब ऐसा भी हो सकता है उन्हें गवर्नर या वीपी बना दे. They must not occupy any other post, diplomatic or civil, which requires president which requires appointment by president under his warrant and seal. तो ऐसी कोई पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करनी है. जैसे गवर्नर हो गई, ठीक है ना, गवर्नर की पोस्ट हो गई. जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी ऐसी पोस्ट हैं जो कि NCSC, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के चेयरमैन वगैरह हो गए. तो जो भी ऐसी पोस्ट हैं जो कि विच रिक्वायर्स प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए अंडर
under warrant of his hand and seal. Sorry, under his warrant of हैंड एंड सील, मतलब उसका हाथ से साइन हो या सील हो, ऐसी कोई भी पोस्ट प्रेसिडेंट जो इशू करेगा या प्रेसिडेंट जो देगा, ऐसी कोई पोस्ट ये ऑक्यूपाई ना कर सकते हो. देयर इज वारंट ऑफ हैंड एंड सील. एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? तो ये गवर्नर की पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करने कर पाएंगे, कैग की हो गई, ठीक है, और ये NCSC NCST की पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, NH, ठीक है, चेयरमैन वगैरह की. उसके अलावा व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? दे मस्ट join any political party. They can join any political party after minimum 10 years of their retirement. तो रिटायरमेंट की कम से कम 10 साल तक वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना कर पाए, 10 साल के बाद ही कर पाए रिटायरमेंट. रिटायरमेंट आप जानते हैं 65 और 6, whichever is earlier. So they can join only political party after minimum 10 years of their retirement. 10 साल कम से कम रिटायरमेंट के 10 साल तक वो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं कर पाए उसके बाद ही कर पाए. तो 3 पॉइंट्स हो गए. नॉट ऑक्यूपाइंग एनी पोस्ट इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड, प्रेसिडेंट अंडर इज वारंट ऑफ हैंड एंड सील, ऐसी कोई पोस्ट ऑक्यूपाई ना कर पाए जो कि कानून द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा दी जाएगी, कानून द्वारा सैंक्शन पोस्ट है ऐसी. Any other post. Or third, they cannot join any political party. Minimum 10 years are required. So these, if ये CVC में है एक्चुअली ये पॉइंट, ये हैंड एंड सील वाला CVC में है. CVC भी अपॉइंटमेंट हैंड एंड सील में होता है. तो CVC को रिटायरमेंट के बाद कोई और पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, हैंड एंड सील भी नहीं कर सकते, ऐसी पोस्ट जो प्रेसिडेंट द्वारा इशू होती हैं, और ये वाला भी नहीं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते. CVC, तो जस्ट लाइक CVC यू कैन से CEC के लिए भी सेम होना चाहिए. जैसे CVC को किया गया है कि आफ्टर देयर रिटायरमेंट दे आर डिबार्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, प्लस दे कैन नॉट ऑक्यूपाइड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और एनी पोस्ट which is issued by president under his warrant of hand and seal. So these are the important points which you must remember for CEC and EC. ऐसा चेंज करना पड़ेगा. इनका एक एक्ट है, conditions of service and of election commissioners and some conduct of business, something, act 1951 something. So this is the act. कुछ एक्ट बनाया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कंडीशन ऑफ सर्विस डिटरमाइन करने के लिए पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का हक दिया है. सो कॉन्स्टिट्यूशन there's a clause in constitution that parliament can make laws to determine the conditions of service of chief election commissioners and election commissioners. So parliament can make a law to determine the condition of service. तो condition of service तो बना दी, बट उसमें ये पॉइंट बहुत गड़बड़ छोड़ दिया कि दे आर नॉट डिबार्ड, और साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन भी इनके लिए नहीं रखी है कोई. इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन. कोई भी अपॉइंटमेंट हो सकता है, किसी को भी, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. सो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन. Qualification for appointment as CEC and EC. So these are some loopholes which must be addressed by the parliament, क्योंकि parliament ने ये कानून बनाया है, because constitution has given this authority to parliament to determine the conditions of service of chief election commissioners, election authorities under the election commission. So this is the lecture of about conditions of service, and the election commissioners are they are not debarred from future employment under the central and state government. So this is the lecture about election commissioner, conditions of service. In the next lecture we will study another important political topic.
अगर आपको हमें लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली कमेंट दें इस लेक्चर के ऊपर, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।